us to next habit number 5. मैंने बहुत लोगों को देखा है, especially लड़कियां. Please don't make I might sound sexist, but that's not the intention. वो लोग ना बुक पढ़ने से पहले ना वो ऑरेंज हाइलाइटर लेंगे, फिर येलो हाइलाइटर लेंगे, फिर स्केल लेंगे, फिर पेन पेन भी 3 कलर के रहेंगे. हाँ, वो ब्लू, ब्लैक, रेड, और वो पट्टी, रबर, पेंसिल, ये सब वेपन्स लेके बैठेंगे. एंड दे विल हाईलाइट ऑन सो मच ऑन ईच पेज that the non-highlighted part looks like highlighted. So you don't remember by decorating a book. See, highlighting some sentence and claiming that I have understood it is like saying garnishing a ready-made dish with coriander and claiming that I learned a recipe. मेहनत किसी और की है, आपने बस उस पर कॉरिएंडर डाला और आप सीखोगे क्या रेसिपी? नहीं. See, now this is very important discussion. Please listen to me carefully. We all have our own personal vocabulary. Okay. For example, now अभी मेरे टेबल पे बहुत सारा सामान है and Ashini comes to my house. She says, "Oh, the table is quite crowded." I might say the table is quite cluttered. बिकॉज हमारा जो स्कूलिंग है, जो भी बैकग्राउंड है, थोड़ा थोड़ा रहता है. अमेरिकन हैव द टेंडेंसी ऑफ यूजिंग द वर्ड्स आरंट, इजंट. हम नहीं यूज करते. वी से आर नॉट, इज नॉट, शी इज नॉट, शी इजंट हम नहीं बोलते. तो होता क्या है, इफ वी ट्राई टू कॉपी द लैंग्वेज ऑफ द ऑथर सेम एज इट इज एंड ट्राई टू रिमेंबर और एक्सप्लेन by copying the line in your notes as it is, that will not help you to remember the ideas. Because words are just stupid messengers. The message is in the idea, in the meaning, right? तो करना क्या है उनमें? Now this is quite ironical. The best way to learn from a book, to close the book again and again and again while reading. I do this religiously. Whenever I get some exciting idea, I close the book, because book को अगर open रखूंगा ना, I'll be tempted to copy the words of the author. It's not about just gaining the knowledge, it is how you gain the knowledge, the process. So the best way to gain a piece of knowledge from the author is to explain it in your own words to your friend. In your own words is the important thing. आपको अगर आइडिया समझी है ना, तो आपके जो भी मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में आप सीखा, वो अलग ही रहेगी. वर्ड्स वो सेम नहीं रहेंगे, as long as you try to retain the message. All right? तो ये बहुत important. This is called as internalizing the knowledge and not just garnishing the dish with coriander. Now you're actually, cooking. Of course, it will not be exactly as the YouTuber has shown. The taste अलग रहेगा, but it will be your own dish, right? ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. Now that idea becomes your idea. Now that is not plagiarism. The author wants you to make it your idea and live it, make it as part of your character. और जब आप बार बार वो explain करोगे, notes में अपने शब्दों में लिखोगे, then that is the victory of the book. You are living the book. अलग implementation करने की जरूरत भी नहीं है. My next book is coming, how to implement what you read. उसमें मैं ये सब लिखने वाला हूँ. लोग बोलते हैं ना कि अब पढ़ता तो हूँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है मुझसे वगैरह, वो उस पर मैंने काफी अभी स्टडी किया है कि यू रीड एंड देन इम्प्लीमेंट, ऐसा है ही नहीं कुछ. एनीवे, वो मे बी जब बुक आएगा तभी हम करेंगे. टू प्री मैच्योर टू डिस्कस अबाउट इट. इट्स एन एलिमेंट्री स्टेज राइट नाउ.